hela, and inducible cells, hela, stimulatory sex excitability and a conductivity activity found in the nervous tissue. बुझेला, means when a stimulus will be calm, external stimuli is calm, it will be excitable and it will transmit the impulse, the two informations, neural information from one nerve to another nerve or from one nerve to muscles. बुझेला, दीटा way ही परबो, nerve to muscles or nerve to nerve. So neural tissue has, though we call this is a tissue, that means it has so many types of cells. Cells are unite to form tissue. So in neural tissue, the two types of things is there. One is in neurons, another is in neuroglial cells. And you know that neuron doesn't have any capacity of division, but neuroglial cells have the capacity of divisions. So another thing is why neuron is not divided, because they lack a centriole. So whatever cancer occur in the neural tissue, that is only due to the neuroglial cells. In last class we discussed the neurons. In today we will discuss the neuroglial cells. You know that neuron has three parts. One is the cell body, this one is the cell body or cyton, and these processes, one process is the dendrite, another is the axon. These are the processes. Information comes through this and goes out through this to another neurons or muscles. बुझेला, information ए देकी आसीबो, एठी processing हबो, हैला परे ए axon देकी आ गोटे neurons को जाई पारे बा गोटे muscles को भी जाई पारे. This is the parts. And you know that the neural cells, swan cells, okay, swan cells, it is a type of neuroglial cells which will form a wrapping like a structure. गुड़े हबो, wrapped हे जो जंदी paper गुड़ांती सेंदे wrapping हे जाई ची axon चारिपटरे, and this wrapping is known as myelin sheath. हैला, these swan cells form a lipid layer of lipid around the axons, so that it will form the myelin sheath. The external membrane of the swan cells or the myelin sheath is known as what? Who can tell me? This is the neurilemma. Okay, neurilemma. The myelin sheath ro pura external structure of neurilemma, and the axon ro plasma membrane ko axoplasm, and the cytoplasm of the axon is known as axoplasms. Hello, axolemma and axoplasms. The plasma membrane of the axon is known as axoplasm. Axolemma, and the cytoplasm of the axon is known as axoplasms. So this is the things. We last class we discussed these things. In today we can and on the basis of cell processes, the neurons are of four types. One is non-polar neurons. Hello, non-polar neurons. Another is unipolar, bipolar, non-polar neurons, pseudo-unipolar, bipolar, and multipolar neurons. What is the meaning of the non-polar neurons? There is a cell body. Okay, there is a cell body. They have, these are the structure. Actually, आमे कौन कहते ना सेल बॉडी जो स्ट्रक्चर बाहर थिवो ताको हमें डेंड्राइट करथले, तापर जोटा सबटु लंबा स्ट्रक्चर थिवो इन्फॉर्मेशन नै कि जाउतो ताको हमें एक्सन कहथले. बट इन नॉन पोलर न्यूरॉन्स व्हाट हैपन, मन रखथिवो, the informations comes through this and goes out also through this. जे information नै कि आछि से भी नै कि जाउछि, बट कोटा डेंड्राइट कोटा एक्सन हमें ताको डिटरमाइन करि परिबा नाही. We can't determine which one is the axon and which one is the dendrite, because we know that axon will take the information and dendrite will take the information and axon will taking out the informations. बुझिला, taking in and taking out of the informations. So but in non-polar neurons, the axon, these things also take in the neurons and informations and is also take out the informations, so that they have no polarity. This type of neurons do not found in our body. This is found in hydra. This is very good examples of hydra neurons. Non invertebrates manam case dekha jaye. And pseudo unipolar, they have a cytons, and the axon is bifurcated in two area. So this is actually looks a two processes, दुटा भलिया process देखा होची, but axon टा एमती ही हेचे. बुझिला, ताको pseudo unipolar कहंती, which is present in the dorsal root ganglia of the spinal cord. आमे जरे nervous system पढिबा, मु तुमके जरे पढेबी dorsal root of ganglia कोन.
ହେଲା तमरो dorsal root of and another thing is bipolar neurons means cyton one dendrite and one axon is known as bipolar which is present in our eye retina and olfactory receptors ହେଲା nasal chamber जो olfactory receptor अछि सुंघिया पई की आ देखिया पई हमर जो retina अछि सेथिरे थाए then multipolar neurons means one axon जो चित्र आम नॉर्मली करंती वन एक्सन्स एंड मल्टीपल डेंड्राइट बहुत सारा डेंड्राइट थिबो सो दिस इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मैक्सिमम बॉडी रे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही थाए बुझिला एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स मींस देयर इज नो डेंड्राइट अनदर इज यूनिपोलर न्यूरॉन जोटा एम्ब्रियोनिक स्टेज रे देखा जाय मन रखथिबो देयर इज नो डेंड्राइट ओनली वन एक्सन्स so this is known as unipolar neurons गोटे ही प्रोसेसस अछि खाली एक्सन अछि जोटा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड रे थाए मदर यूट्रस भीतर जरे पिला थाए सेते बेले देखा जाय डेंड्राइट ओके तो एतिक हम प्रीवियस क्लास रे देखिथिले नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल्स ओके न्यूरोग्लियल सेल्स देखो दिस इज डिफरेंटेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे हम की आछि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ पेरिफेरल रे सेठु जो न्यूरॉन्स बाची सेगुडा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तमु कहितली देयर इज ए स्वान सेल्स कवर्ड द माइलिन शीथ जो एक्सन चारिपट रे जो माइलिन शीथ थाए ताकू किए कवर करे ना स्वान सेल्स कवर करे but that thing which done by oligodendroid cells in the central nervous system and it is very important 2018 ने आस्तिला ता पूर्वर भी आउथरे बधे आस्तिला एमती क्वेश्चन माने ए क्वेश्चन बहुत थरा आसीची बुझ पारलो तो आमे जानले कोन जो न्यूरॉन्स रो स्ट्रक्चर तमे देखुचो एमती थाए एक्सन्स थाए एरा सब डेंड्राइट्स थाए ए एक्सन को के कवर कर रखिची माइलिन शीथ कवर कर रखिची बोली हमें कहूचे हैला माइलिन शीथ कवर करके रखिथिबा हेतु लिपिड रो लेयर माने एटा गुड कंडक्टर हिसाब इंसुलेशन रे हेल्प करे इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करे सो माइलिन शीथ जदी कवर करी रखिथबो एटा व्हाइट कलर रो देखा जाय आ माइलिन शीथ केवल एक्सन को कवर करे ना डेंड्राइट ना साइटोन तांको काहा को भी कवर करे नाही तो ये जो माइलिन शीथ बनेबा वाला सेल होची स्वान सेल्स इन केस ऑफ न्यूरो सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस हम बड़ हाथ गोड़ अरला जोरे किंतु मुंडा और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रे तमर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स माइलिन शीथ बनौची क्लियर एस्ट्रोसाइट सेल सपोर्ट रे हेल्प करूची सॉरी सैटेलाइट सेल्स एस्ट्रोसाइट्स मींस यार स्ट्रक्चर स्टार भलिया आइतो तारा जेंति देखिया पय से बडा आइतो एस्ट्रोसाइट्स एक्चुअली ये कोन करबो ना एस्ट्रोसाइट सेल गिव्स नरिशमेंट हैला नरिशमेंट प्रोवाइड करबो एक्चुअली कोन हेथाय ना ब्रेन को हमर न्यूरॉन्स को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई हेइ न थाय काहे कि ना सपोज दिस इज द ब्लड वेसल्स and this is the neurons suppose this is the neurons काहे कि न थाय बिकॉज़ न्यूरॉन्स रो रिपेयर कैपेसिटी न थाय एते तो जदी डायरेक्टली ब्लड से तो कांटेक्ट रहबो किछि ब्लड भीतर दिगे जी माने पैथोजेन थिबो तो जिबार चांसेस बढ़ी जिवो तो डिजीज होबार किछि अनवांटेड थिंग्स न्यूरॉन्स को जाय कि डैमेज करियार चांस बढ़ी जाय तेनु करी न्यूरॉन्स को डायरेक्टली तमरो कोन माने ब्लड सप्लाई हे न थाय तो सेठी कोन थाय एस्ट्रोसाइट सेल्स ये तारा भलिया स्ट्रक्चर हेतिबो जे कि कोन करथिबो ना किछि आर्म तार ब्लड वेसल्स रे बुडी रहितो आ किछि होची न्यूरॉन्स रे त माने एठु न्यूट्रिएंट आसीबो एठी की जीवो न्यूरॉन्स को हला तो सेहिति पई कि हमर जो नर्वस सिस्टम रे जो डिजीज हेले ताकू क्योर करिया मुश्किल हे जायति पई जे काहे कहलो माने when we intake the medicine will go to our target area through the blood हमें तो खाउचे ना मेडिसिन तो ब्लड रे जीवो किंतु एठी कोन हुए तमे मेडिसिन नेलो से एस्ट्रोसाइट सेल्स मेडिसिन पठेबो न्यूरॉन्स पाकू से कबेटा दरकार नै ओनली न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ही पठेबो बुझिला सेति पई प्रॉब्लम हुए बुझिला एस्ट्रोसाइट सेल्स तापर होची गोटे कोन एपाइंडोमल सेल्स एस्ट्रोसाइट सेल्स दीज आर द स्टार शेप्ड हला ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करूची डायरेक्टली ब्लड को छाड़ीबनी तो ता पाखु को आसीबो ब्लड न्यूट्रिएंट्स को से नबो से नै कि दबो न्यूरॉन्स को दि स्टार भडा देखिया पई से देता हला एस्ट्रोसाइट्स दीज आर मैक्सिमम नंबर इन ग्लियल सेल्स सबटू हाईएस्ट नंबर रे होची काना ये नरिशमेंट प्रोवाइड करिवो ना दीज आर सराउंडेड इन द कैपिलरी ब्लड वेसल्स व्हिच हेल्प इन रिपेयर द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स बुझपल्ला तापर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कोन करूची इट विल फॉर्म द माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर तो माइलिन शीथ जदी प्रेजेंट रहिबो अच्छा देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कोन करबो इट विल कांटेक्ट मोर देन 2 न्यूरॉन्स मोर देन 2 तार ई भी स्टार बडा स्ट्रक्चर हेची तो दुई तीनटा न्यूरॉन्स को सपोज एटा गोटे न्यूरॉन्स देखुछो तो ई आ गोटे न्यूरॉन्स देखुछो एपोर्ट साइड रे सपोज आ गोटे न्यूरॉन्स जाइथिबो ई तार ए बडे की
एठी भी माइलिन शीथ काट दबो एठी भी माइलिन शीथ एठी भी माइलिन शीथ तयारी कर दोचे बुझ परलो सो ये होची ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स रो अनदर इज एपेंडेमल सेल्स मन रखतिबो दिस इज द ओनली सेल हु possesses microvilli along with cilia तार microvilli भी अछि ता सहित cilia भी अछि हला बॉडी रे आम बॉडी रे मन रखतिबो आम बॉडी रे फ्लैजेला होची एकमात्र सेल जोतरे कि जोडा कि स्पर्म रे अछि आ आम बॉडी रे कोनोसी सेल रे फ्लैजेला नाही फ्लैजेला केवल स्पर्म रे अछि बिकॉज़ इट विल हेल्प इन मूवमेंट बट सिलिया मैक्सिमम सब प्राय जो ये सेल गुडा दरकार प्रेजेंट अछि तो ता भितरु एपेंडेमल सेल्स रे भी तमरो सिलिया अछि also along with the cilia microvilli is also present which will actually ये कौन करे ना it will form the some of these cells related to maintain the flow of the cerebrospinal fluid काना हमर जो cranium brain रहिला ताको कवर करके जो membrane रहितबो सेठी कोन थाए CSF थाए cerebrospinal fluid which will protect the brain act as a shock absorber हिसाब रे काम करे तो ये कोन करे cilia movement जोगु मैम सिलियर काम सिलिया कोन करबो ना बीटिंग रे हेल्प करबो माने मूवमेंट रे हेल्प करबो एला एबडा हेयर बडिया स्ट्रक्चर थिबो जेंति डंगा देखि जो आहुला मरा हले जो गोटे जे डंगा बाहुथो से गोटे काठ एंति धरतिबो ताको एंति कले पानी जो डंगा आगु आगु जिवो एक्जेक्टली सिलिया रे जतले मूवमेंट हबो इट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द थिंग्स जेमिति कि हमर को जगह थाए फालोपियन ट्यूब रे थाए जेतेबेले ओभम आसीबो ये तार मूवमेंट करी ताको आनी कि छाडिबो फालोपियन ट्यूब रु यूटेरस पाखा पाखी आनी कि छाडिबो बुझुजी तो फर्टिलाइजेशन हो सारा पर ब्लास्टुला स्टेज को आनी इम्प्लांटेशन करिवो तेनु करी जो जगह रे हमर कोन मूवमेंट रो नेसेसिटी अछि से जगह रे सेल रखा है एठी फ्लूइड गुडा अछि फ्लूइड एपट से पट हबो पानी गुडा बुझि परलो तो सिलिया रो ए होची काम देखो माइक्रो सो माइक्रोग्लियल सेल्स मींस ये होची फागोसाइटोस नेचर तो पढ़ेला बेले को पढ़ेबी तो हमरो डब्ल्यूबीसी जो रहिला तो ये होची था ग्रानुलोसाइट तुमे सुनिथियो न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बासोफिल लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स सुनिथियो त माने ब्लड रे डब्ल्यूबीसी पांच प्रकार रो थाए ये जो मोनोसाइट्स कथा तमे देखुचो ए मोनोसाइट्स डिफरेंट ऑर्गन रे डिफरेंट स्ट्रक्चर हे जाईची जेमिति कि इनसाइड द लिवर इट इज नोन एज कुफर सेल्स हला लिवर रे होची कुफर सेल फंक्शन से का it will act against the pathogen any foreign molecule who comes inside the body it will damage the pathogens the function is the same but the name is different in case of liver it is known as Kupffer brain it is known as a microglial cells in case of what lungs tomorrow what are this telling these are microglial pneumocytic cells is somehow I forgotten this word so different area the name is different which is microglial cells acha so another is swan cells which is form the myelin sheath inside the in the peripheral nervous system structure so ये रहितला nervous system all about your nervous tissue देखो so all the things in one side this is a blood capillary ये हैला blood capillary so मते को what is this cells एटा कोन हेतो ए जो ब्लू कलर सॉरी ग्रीन कलर जो देखुचो एटा की सेल हेतो एटा कोन हेतो मते को एटा कोन हेतिबो जो ब्लू कलर जो देखुचो सॉरी ग्रीन कलर इमटे 11 मारुची एटा की सेल हेतिबो पहले देखिए एस्ट्रोसाइट सेल्स है ना ये ब्लड रू कौन है जी देखो एमती ब्लड वेसल्स को रखी धरी जी देन ये कौन कर पुणी न्यूरॉन्स को सप्लाई है जी बुझिला देखो हम एस्ट्रोसाइट सेल्स बोली कहबा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखो ये कौन कर माइलिन शीथ बनै छी बुझिछ कि नहीं एठी माइलिन शीथ तयारी करछि एठी आ सहित जोड़ी के आ सहित माइलिन शीथ यार ए न्यूरॉन्स रो माइलिन शीथ ये सेमती आ सहित जोड़ी के आ सहित जोड़ी के माइलिन शीथ बनै छी बुझिला एस्ट्रोसाइट नरिशमेंट रे हेल्प करिवो ब्लड रू खाइबा आनी कि न्यूरॉन्स को दबो तापर तमर रहला कोन ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ तयारी करिवो ये जो फंक्शंस बहुत इंपोर्टेंट तमे भल से पढ़ी मन रखिवो तापर माइलिन शीथ रहला माइक्रोग्लियल सेल्स कोन हो एमती प्रेजेंट थिबो जदी कोनोसी पैथोजेन बाय चांस एंट्री गला से ताको मारिवो बुझिला अच्छा अनदर जे एपेंडेमल सेल्स देखो तार सिलिया अछि बाहर तब तमर सीएसएफ थिबो सेरेब्रोस्पाइनल
फ्लूइड तो ये सिलिया ताको बीटिंग करके हेल्प करिवो मूवमेंट करियारे हेल्प करिवो हैना सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्वस टिश्यू अच्छा नर्वस टिश्यू कोन जदी डाउट अछि कुह 2 8टा 10टा 8 रे 10टा 20 सुधा सारिबा आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार जदी कोन डाउट अछि मते कुह मैन क्वेश्चन नर्वस आसे कि टिश्यू हां मैन क्वेश्चन एठो केमति आसे कि क्वेश्चन आसीबो जो फंक्शंस गुडा ए जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स रो फंक्शंस कोन 2018 ने आस्तिला जे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे माइलिन शीथ किए बनाए सॉरी पेरिफेरल नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे क्वेश्चन आस्तिला स्वान सेल्स सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे हु विल फॉर्म द माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑप्शन ने तमरो कोन थिला स्वान सेल्स थिला ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स थिला बुझला एस्ट्रोसाइट सेल्स थिला एमती डिफरेंट डिफरेंट थिला पिला प्राय समस्त जानती कोन द स्वान सेल्स विल फॉर्म द माइलिन शीथ actually the swan cell will form the myelin sheath in peripheral nervous system but in central nervous system which cell form the myelin sheath ओलिगोसेल oligodendrocyte cells बुझला आंसर इज oligodendrocytes so एमती क्वेश्चन हे परिबो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ astrocyte cells ए टाइप रो क्वेश्चंस देन न्यूरॉन्स रो तमरो माइलिलेमा और न्यूरिलेमा हला प्रीवियस क्वेश्चंस देखिबो अच्छा आउ कोन नलै तुमको मु गोटे बुक আজি कैंपल बायोलॉजी नेबी तो तार सब चैप्टर अछि नलै मु फोटो उठे कि तुमको पठे देबी विथ आंसर एक्चुअली सेडा आसुची तमे सेडा देखो जदी आंसर पढी कि माने जानि होची ठीक अछि जदी क्वेश्चन बुझी न पारुचो नेक्स्ट क्लास रे जो मु क्लास नेबी मते पचारिबो बुझ पालो मु नले फोटो उठे कि स्लाइड माने स्क्रीनशॉट नै कि नर्वस सिस्टम रो टिश्यू रो तुमको पठेबी मु शेयर करे ग्रुप रे जोडा सेडा कैंपल बायोलॉजी जे तमानक भितरु के इंटरेस्टेड अछ से माने कोन एमसीक्यू बुक नबा पई आई कैन शेयर जदी से इंटरेस्टेड ना हो तो ठीक अछि बही शेयर करबी जदी तमाने इंटरेस्ट Yes, ma'am. दबो Yes, ma'am. हला Yes, सेटा ma'am. ओके आज मु Yes, ma'am. कैंपल बायोलॉजी तुमको कैंपल बायोलॉजी तुम जदी करबो नो वन कैन डिफीट यू कोनोसी भी लोक तुमको डिफीट कर परबो नीट क्रैक करिया पई के कहना क्वेश्चन सेठू ही बनुची हला so ठीक अछि today we'll discuss your second year topic one NCERT 2 part 2 that to human reproductions बुझला so in this part we'll going to study about the male reproductive system कोन पढिबा आज गोटे दिन नै तो एबे कंटिन्यू हबो 1 2 3 4 5 6 दिमाग 7 फास्ट हला ईयर पढ़ेबे तो one is हाँ फर्स्ट ईयर भी पढ़ाबो बट सरला फर्स्ट ईयर दीटा चैप्टर सरला ना तमरो लिविंग वर्ल्ड आ एनिमल किंगडम देन टिश्यू चैप्टर सरला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जोडा हला सो आज हम पढिबा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हला सो देखो कोन कोन ए चैप्टर अंडर आछि गोटे हला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढिबा देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन गैमेटोजेनेसिस मींस इज हाउ द स्पर्म एंड ओवम विल बी form then menstrual cycle this is a cycle of the female पढिबा then fertilization and implantation when the ovum and sperm will be meet they will form the zygote after that the zygote undergo division and in a particular blastocyst stage it will get implanted inside the uterus mother uterus re ek hobo implantation hobo after implantations the pregnancy will be persist and the pregnancy will be continue and we also know what are the things happening during the pregnancy then embryonic development this is the embryonic development after that there is a delivery paturation means giving birth to young one hela paturation or a delivery then lactation to feeding the baby breastfeeding to the baby is known as lactations which part of paturation means delivery lactation means giving the feeding or nutrition to the baby clear अच्छा सो एठी जति प्रोसेस देछि तुमको आगो फर्स्ट बुझिया को पड़िबो सो तो प्रथमे हमें ताहले देखिबा तुमको कोन व्हाट इज रिप्रोडक्शंस तो डेफिनेशन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शंस रिप्रोडक्शन कोन so reproduction is the criteria of a living beings okay last हमें फर्स्ट क्लास रे हमें पढ़थिले लिविंग वर्ल्ड तमे तरे पढ़िथिलो ग्रोथ रिप्रोडक्शन मूवमेंट लोकोमोशन मेटाबॉलिज्म ए सब जिंस रहिले हम ताको कोन कहउथिले ना दिस इज द लिविंग बीइंग्स सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग बीइंग्स देन हाउ वी कैन डिफाइन ए रिप्रोडक्शन केनते हमें डिफाइन करि परिबा ना गिविंग ए यंग वंस लाइक इटसेल्फ गिविंग ए
young ones young ones जी जो भलिया like itself ओके जी जो भलिया तारी भलिया गोटे पिला जन्म करबा प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहंती एलिफेंट ऑफस्प्रिंग इज लुक्स लाइक एलिफेंट a deer offspring look like a deer a human offspring looks like a human बुझला जे जो भलिया तारी भलिया एग्जैक्ट गोटे पिला माने फॉर्मेशंस करबा प्रोसेस को रिप्रोडक्शन को लेके कहंती सो reproductions giving a young ones why called young ones कहीं ना जेमती हमर छोट पिला को माने तमरो डॉग रो पिला को कोन कह जाय पप्पी कह जाय तमरो किड कह जाय छेली रो पिला को हैला ह्यूमन पिला को बेबी कह जाय तम करी यंग वंस लगा होची बुझेला तो ये होची रिप्रोडक्शंस रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल so reproduction is of two types one is asexual and this is sexual reproduction where the sex organ are not involved or gamete are not, sorry sex organ gamete sex organ are not involved this they are known as what your asexual Asexual. reproduction and when the sex organs are involved is known as sexual reproduction madam first number chapter से पढ़ेबे मु तो sexual reproduction that to human रो बुझला अच्छा what are the steps step गुडा ते देखो so human reproductive system is consist of प्रथम जिंस होची कोन ना formation of gamete gamete means sperm जदि हेतबो कोन ना male and ovum in case of female okay this process is known as gametogenesis how the sperm will produce inside the testis and how the ovum will produce inside the ovary is known as gametogenesis one is spermatogenesis another is oogenesis both are collectively called gametogenesis after formation of these things how the sperm will deposited inside the female body okay this is known as uh, sperm of okay so taku kon inseminations transfer of sperm into the female reproductive tract is known as inseminations first gametogenesis then inseminations after insemination when the sperm are deposited inside the female reproductive tract of inside the female body the reproductive tract then there is a chance of fusion of male and female gamete the sperm there higala then there is a chance of fusion sperm and ovum and then the zygote will be formed okay so tapre kon fertilization mating of sperm and ovum or fusion of sperm and ovum fertilization after fertilization the zygote will be formed this is followed by formation and development of the blastocyst then the zygote undergo repeated cleavage or division after that it will form the blastocyst the blastocyst okay from the blastocyst then it will comes to the uterus tapre kon hobo na uterus ko asibo then there is a developmental phases this is known as a gestational or pregnancy period jota ko kahanti this is a gestational period boli ki kahanti and the delivery of the baby this is known as a parturition this one is the parturition so lekho sorry so what are the first step gametogenesis gametogenesis means ovum and sperm will be formed gametogenesis pore insemination the sperm is go to female reproductive tract after that there is a fusion ovum and sperm ro kon hobo na fusion and it will form the zygote this is 2n number of chromosome zygote insemination then the term is fertilization there is a fusion of gamete sperm and ovum fertilization it will form the zygote then zygote undergo cleavage and then implantation occur this is attached with the mother uterus then implantation attachment the blastocyst inside the mother uterus is known as implantations after implantations what happen after implantations there is a gestational period means development of the baby fetus inside the mother uterus vitre chua kemti badhuchi so taku ame kon kaiba gestational period okay
तो ह्यूमन बीइंग केस रे केते 9 मंथ 10 डेज 10 मास 10 दिन नो 9 मंथ 10 डेज मोस्ट प्रोबेबली प्लस और माइनस 7 7 दिन आगुआ भी पिला है पारे 7 दिन लेट भी पिला है पारे हला गेस्टेशनल पीरियड then after that there is a paturation or delivery of the baby paturation after that lactation ताको तापर delivery चला पर कोन करे खाया को दवा को पड़िबो lactation तो बुझियला एतिके टोटल सब प्रोसीजर हमें पढ़िबा now from today we'll discuss about the male reproductive system clear ए जो प्रोसेस समझते बुझिला स्पर्म ओवम तयारी हला तयारी हला पर स्पर्म जाय कि कोठी जेहेतु इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन मानक केस रे the sperm must have to go to the female body through the female genitalia tract or reproductive tract okay so when the sperm was deposited then it will fertilize the ovum clear then after fertilization the developing embryo was settled inside the mother uterus and it is known as what implantation must be occur 9 months 10 days in case of human and different organism it is different of times so after completion of the gestational period there is a delivery or patuation or delivery so after patuation there is a lactation clear बुझिबल तापर से खाइबा को दिया हबो तो गुटी चैप्टर माने एतिकी जिंस तुमको पढिया को पड़िबो so when the reproductive time will be arrived so as the age of 12 11 to 12 age बेलको कोन हबो ना the reproductive age will be arise जेटा कि हम टीन एज बोल के कहउचंदी बर्तन तमे जो अच्छा जो एज रे तो छोटो पिल्ला जो टीन एजर जो कहंती तो घर सब छोटो पिल्ला हला तुमे किछ डिसीजन नै परबनी माने एंती सब ये करंती तो एक्चुअली कोन ना यो reproductive age will be start at the 11 to 12 year 11 to 12 year start habo when the reproductive age will start this is known as a puberty starting of the reproductive age is known as a puberty clear so देखो so now we will discuss about the male reproductive system okay अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिया पूर्व मु तुमको केते जिंस बुझे दोची तापर हम तुमको तापर नोट्स देखेबी हला अच्छा मते कुह व्हाट आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो मन भीतर मते के कहि परिबो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कोन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कोन तो माने प्रायटा सेकेंडरी जस्ट पढी के एग्जाम देइथिबो तो माने तो सब भलो पिला ना माने तो कुह भल एग्जाम भी भल करछ रिजल्ट भी भल आसी तो तमाने कह सो व्हाट आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के कहि परिबो तमनक भितरु कोटा मन अछि जोटा नाले गोटे भी मन अछि को सेकेंडरी को कि प्राइमरी को जोटा मन अछि को कनेक्टेड अछो ना नाही यदि न आसली कुह माने के मन नाही हमें करबा मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द मेल रे होची टेस्टिस हां आ फीमेल रे ओवरी हां आउ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल हैज डिफरेंट पेनिस एगुडा सब मेल रे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माने सेटा थाए आउ फीमेल रे थाए भेजिना माने से जो कोनटा ओवरी आ गोटे होची जो ब्रेस्ट कोनटा देखो यस mammalian मो gland आंसर माने ऑर्गन पे ठीक अछि बट माय क्वेश्चन वाज व्हाट आर द कैरेक्टर्स ओके सो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम बोथ सेक्स पे कहूची स्पर्म फॉर मेल तो तमे जोडा कहले दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कथा कहले मो तुम क्वेश्चन करतली कोन ना कैरेक्टर्स बुझिला जाहो तमे आंसर देलो दैट इज गुड थिंग देखो तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स कथा कहूची एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कथा कहूची सो formation of the sperm is the primary sexual character and the formation of the ovum the primary sexual character in case of female secondary sexual character कोन ना development of beard and mustache दाढ़ी निस उठिबा broadness of the shoulder बुझला तो शोल्डर ब्रॉड हवा एडा सब बुझियो कि मेल मानक केस रे कोन सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर बुझी होची। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हला and female manako kasra kon occurrence of the menstrual cycle, development of the breast, and a high pitch but female sorry low pitch in case of male. So these are the characters. बुझ पालो characters और organ तमे जोटा कहलो these are the organs. तो primary sex organ कहले तमरो testis in case of male and secondary sex organ कहले ovary in case of female. Clear होला बे? तो puberty कौन जानलो? Puberty terminology किछि मन रखो. One is puberty. When the reproductive age will start, it is known as a puberty. Hello, puberty. Then menarche. Menarche. In case of female, when the menstrual cycle is started, it is a menarche. When the cessation or stoppage of the menstrual cycle at the age of 45 to 50, this is known as a menopause. बुझी पड़ला? Menarche is starting of menstrual cycle. First menstrual cycle when it started, it is known as menarche. And when the menstrual cycle is stopped, in case of female, the reproductive age is constricted after 45 to 50. There is a chances of there is a cessation of the menstrual cycle. This is known as menopause. Clear? अच्छा तो आज हम देखिया कौन ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो बहुत इजी, टिके खाली ध्यान देके देखो बुझी पारिबो. बहुत इजी. The male reproductive system is present in the pelvic regions. Okay, pelvic region बुझी पारुचो जेटा को अंटा तमे कहूचो जेटा को हैला pelvic region. Actually इति pelvic basins बडा स्ट्रक्चर एंदी थाय हमरो जोटी कि तमर एंदी थाय बाहरी थाय एंदी pelvic बडा थाय. pelvic girdle कहंती जेंती हमरो कांध पछपटरे देखियो तम पिठी आडू देखियो एंदी जोटे त्रिभुज भलिया ट्रापेजियम मसल्स अछि एबा त्रिभुज भलिया माने माने पतरा पिला थिबो पछ आडू पिठी आडे जद तुमको के हाथ मारिबो देखियो ए भया गोटा अछि हैला. तो स्कैपुला बोली कि कहंती. एथि भी सेमती कोन अछि ना तमरो भडा स्ट्रक्चर अछि बुझला. pelvic muscle बेसिन आमे जेंती हाथ दुई होंती बेसिन घरे जेंती लगा हैछि. तो एक्जेक्टली सेमती रही छी जे कि टोटल बॉडी को ए करछि. तो ताधि सेडु थाय रीजन तापर तम गोडो बाहरी छी बुझ पले. pelvic region ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अछि. तो only thing is the testis is present extra abdominally. abdomen भितर नाही बाहर प्रेजेंट अछि. अच्छा तो आमे देखिया एबे ताहले कोन what are the male reproductive system consists of a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia. बुझुची तो गोटे हला testis आ गोटे हला accessory duct, accessory glands and external genitalia, that to penis. हला ए accessory duct and accessory glands रे कोन कोन जिंस आछे हमें देखिबा. हला एटा तुमको चित्र देखौची बुझी परिबो. देखो this is the structure of a male reproductive system. So this one is the testis. Change the color. Yes, this one is the testis. Okay, this is the testis. Bujhela, and this one is the penis. These two things is present outside. We can see in naked eye. But this part, this part is present inside the abdomen. पेट भीतर अछि लोअर बेली बुझिला. एतिक जिंस हमें बाहर देखिया को पाउचन इन द थाई रीजन. क्लियर हला. सो दिस इज द टेस्टिस and this is the penis external genitalia. देखो testis, the testis. Okay, from the testis the epididymis, a tube is arises एठू बाहर की जाईची काना testis रु तमरो sperm तयारी हबो. ए सरला परे ए छोटे ट्यूब अछि epididymis. epididymis जाईची बाहर एंदी testis रहला एमती. There is a coiling of the tubes is known as epididymis. When this epididymis is straight, it is straight हे गला, this is known as a vas deferens. It will straight and goes to the lower belly. हम तଳ पेट को जाईचे तो पूरा बाहर प्रेजेंट थिला testis हला. मेल मानको केसे it is extra abdominally बाहर प्रेजेंट अछि and it will go through these things to the vas deferens. Okay, this is the vas deferens. That vas deferences will join with a pouch like structure is called seminal vesicles. Like जाईची vas deferens ए पाखर गोटे पाउच भलिया स्ट्रक्चर थियो. पानी पाउच जेंती से गोटे माने ग्लैंड स्ट्रक्चर थियो where the seminal fluid is present. That vas deferences connected with this seminal vesicles.
because the seminal vesicle contains the semen, some fluid who plasma fluids which contains the sucrose, glucose, okay, calcium, some fluid. This is a mix of fluid is present in the seminal vesicles, and here the sperm will goes through and it will contact with the semen of the seminal vesicles, seminal plasma boli ki kahante. After that, what are the glands? This is the prostate gland. Then there is a Cowper's gland or a bulbourethral gland. The other name of the Cowper's gland is the bulbourethral gland. Okay. So मैम yes. मैम आउथरे टिके से सेमिनल वेसिकल परे टिके कोन कहले आउथरे टिके कोन कहूचे देखो. So ये चित्रटा मु तुमको करके बुझे दउची बेटर हबो. एठी भी ना देखो बुझ परबो. देखो फर्स्ट जिंस. This is the testis. एतकी जतकी जिंस देखो testis. Here the epididymis is coiling. एमदी coil हेक रहिची. Then from the epididymis a tube is arises and it will goes to the upper lower belly. हम पेटो को पेटो जो अछि पेटो रीजन को जाईची. बुझले एडा सब बाहर अछि. पेनिस और टेस्टिस पूरा कंप्लीटली बाहर बॉडी रो बाहर इन बिटवीन द थाई रीजन सेठी अछि. तो गला परे this vast differences will connected with a pouch like structure. ये असला ये उडी का सहित कनेक्शन है जो पाउच वाला स्ट्रक्चर रे कनेक्शन है छी. This pouch is known as seminal vesicles. एको seminal vesicles बोली के कहंती pouch. Then it will तापरे तमरो कोन है छी in case of male there is a common passage for urine as well as sperm. Sperm जो रास्ता रे आसीबो urine भी सेही रास्ता रे आसे. गोटे माने ओपनिंग होची गोटे नुहे कि एट ए टाइम स्पर्म आसला बळे यूरिन आसीबनी कि यूरिन आसले स्पर्म आसेनी बुझिला किंतु वे इज सिंगल. सो ये जो यूरेथ्रा अछि दिस इज द यूरेथ्रा एटा कि यूरिनरी ब्लैडर रु बाहरी छी. हियर देयर इज ए इजैकुलेटरी डक्ट इज प्रेजेंट व्हिच इज कनेक्टेड. ये जो यूरिन अछि ए जगह रे कोन थिबो ना देयर वाज ए व्हाट bulbo urethral gland. Suppose this is the seminal vesicles. एपटे आस्तिला तमरो कोन ना vast difference आसी मिसिची. एपटे seminal vesicles अछि. Then another is bulbo urethral gland or Cowper's gland. दीटा ताकू कहा जाय. Seminal vesicles रे एठी fluid उडा किछि थिबो. एपटरु से कोन करछि ना ये धरि के आसी sperm धरि के आसी. तो चित्र डिटेल्स बुझेबी किछि व्यस्त नै. 10 थर हम पढिबा त हम बुझ परिबो. Sperm धरि के आसी एठी seminal vesicles रु नेला. पुणी अगेन कनेक्शन से bulbourethral glands. Okay, prostate gland, sorry, prostate gland तळे कोन थिबो ना bulbourethral gland थिबो. देन ये कोन करथिबो ना तमरो कोठी की जाइथिबो ना यूरेथ्रा को कंटिन्यू होइतो. दिस इज द पेनिस. देखो ताले आउ थरे बते दोछि तुमको. सो एई जगह देखो सेमिनल वेसिकल्स रहला. ये असिस्ट एडी सब खाली स्पर्म आस्थिबो किछि फ्लूइड नथिबो. ये ताको फ्लूइड दे देला सेमिनल फ्लूइड दे देला हला. फ्लूइड दे सरला परे एठी तमरो कोन अछि प्रोस्टेट ग्लैंड अछि हला. प्रोस्टेट ग्लैंड अछि एठी. प्रोस्टेट ग्लैंड मान देखो सिंगल गुटे ही प्रोस्टेट ग्लैंड थाए किंतु प्रोस्टेट ग्लैंड अछि. या सहित कनेक्शन कोन अछि वर्तमान सेमिनल वेसिकल्स रो फ्लूइड प्लस स्पर्म आसी की प्रोस्टेट सिक्रेशन सहित मिसी गेला. प्रोस्टेट जो सिक्रेशन दोतो ता सहित मिसी गेला परे ये हला यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर ये रास्ता आसी यूरिन आसी बाकी ये तमरो यूरेथ्रा अछि. एठी आ गोटे ग्लैंड अछि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बा ताको काउपर्स ग्लैंड कहंती. ये भी ता सिक्रेशंस कोठी की दबो से यूरेथ्रा को दबो. बुझ परछो. देखो आउ थरे तुमको कहि दउची. देखो एठी कहि दउची बुझ परिबो. देखो फर्स्ट जिंस होची कोन ना दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर हला. यूरिनरी ब्लैडर एठी यूरिन स्टोर हे के रहइबो. तमर एठी किडनी रु आसी तमर दीटा ये यूरेटर ए यूरिन स्टोर हे के रहला. यूरिन स्टोर हे के रहला पर यूरिन तो बाहर को आसीबो ना यूरेथ्रा दे की हला. मेल पेनिस थ्रू रे बाहर को यूरिनेशंस भी हुए. पेनिस थ्रू रे स्पर्म इजैकुलेशंस भी हुए. तो ए जो रास्ता अछि दिस इज यूरेथ्रा. एटा टोटली यूरेथ्रा बोली के कहंदी रास्ता यूरेथ्रा. क्लियर. अच्छा. So another thing I was telling that you that so the from the testis there is a epididymis. The vast differences will come and it will goes to the abdomen. Okay, abdomen. Here seminal vesicle is present. It kon thibo gote seminal vesicles present thibo. Okay, so seminal vesicles सहित ये kon karibo na sorry seminal vesicles
then one is a prostate, another one gland is a prostate. Okay, that is a prostate gland thibo, then gote hela bulbourethral gland. सब connection एठी आस्थिबो देखो. So this will connected to the seminal vesicles. ହେଲା seminal vesicles को connected हबो. After that these two are interconnected to this area. बर्तमान आसी urethra कने ए रास्ता एटा ही ओपनिंग अछि बाहर को. तो seminal vesicles रो जो fluid या vast differences, ये जो vast differences थिला, ये जो sperm नै के आसला बर्तमान आसी से कोडी पहुंची जिवे ना तमर urethra रे बुझिला ई जगह रे. Then the prostate gland will give their secretion in this area. Then the bulbourethral gland also give their secretion in this area. After that it will the sperm will ejaculated through the penis. एटा हला पेनिस रहला बाहर स्ट्रक्चर का. बुझ परलो ना नहीं ये जो स्कीमेटिक डायग्राम रे बुझ परलो. तो यूरिनरी ब्लैडर रहइबो एटी सेमिनल वेसिकल्स अछि. तमर जो टेस्टिस रु जो जे नई के आस्तिला स्पर्म जो भास डिफरेंस से ता सहित मिसिबो कारण ताको फ्लूइड आनियार अछि. स्पर्म को खाइबा दबाक अछि जेटी फ्रुक्टोज अछि. फ्रुक्टोज तमे जानि छ तमर डिसीज कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज अछि. ग्लूकोज ए जो तमर कोन अछि सुक्रोज फ्रुक्टोज कैल्शियम हला फॉस्फेट ए जो जिंस अछि which will give nourishment. तेनो आसे तो मिसिबा निहाती दरकार. After that prostate will be there. Prostate gland ro secretion alkaline nature अछि. मु तुमको पढेबी डिटेल्स पढेबी. Then bulbourethral gland ro secretion अछि. जेहेतु एटा this is the urinary bladder and this is the urethra. Urine बाहर को आसिया पई कि होची रास्ता. These things is also connected with this urethra. Then when in the single pathway urine as well as the what sperm will be comes outside. बुझ पालो ना कहले देखी. यदि आउ के बुझी न पड़लो को आउथरे कहि दबा कि असुविधा नहीं किंतु क्लियर हुआ बुझिला. यस मैम. पचार मैम आउथरे कोडा बुझ पालो नहीं को माने किछि बुझ पालो नहीं ना गोटे कोडा बुझ पालो नहीं माने जा कहली किछि बुझ पालो नहीं ना गोटे कोडा बुझ पालो नहीं मते को. मैम गोटे यूरेथ्रा परे यूरेथ्रा परे मु तुमको कोन कहली ये हला ना यूरिनरी ब्लैडर. ये हला यूरिनरी ब्लैडर बुझ परछ तो त माने एई जगहटा पूरा यूरेथ्रा बुझ परछ तो ए टोटल टा एठू एना ये हला यूरिनरी ब्लैडर एठी दियोटा ब्लैडर ये होची यूरेथ्रा. ता माने तमे भाबिबो जे सेमिनल वेसिकल्स जो रहला सी ता सिक्रेशंस भी यूरेथ्रा को दोथबो. प्रोस्टेट ग्लैंड एटा जो ऊपर देखै छी एक्चुअली गोटी अछि आ तार जस्ट माने तमको माने तळे रह जाइथो सेटा ऊपर रह जाइथो. एठी चित्र रे तम एमति लागुची बुझ पालो. तो प्रोस्टेट ग्लैंड रो सिक्रेशन भी सेही यूरेथ्रा जो रास्ता अछि यूरेथ्रा अछि सेठी की भी आसीबो बुझुची. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रो सिक्रेशंस भी दी पट साइड रे दीटा अछि सेही यूरेथ्रा को आसीबो. त माने ये भी टेस्टिस रु आनी कि स्पर्म देची ये फ्लूइड आनी देला खाइबा को. प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कालाइन नेचर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रे टिके एसिडिक नेचर थाए बुझ पाइलो. तो माने समस्त तांकर सिक्रेशंस को कोडी यूरेथ्रा को देबे. Urethra होची this is the when you saw the penis through which urination will be occur. Exact this is the particular way through which the semen will goes or ejaculated throughout the penis. तेनु करी तुम हां ये प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड रो फंक्शन डाइट तने कोन होता पढ़िबा में 1 by 1 पढ़िबा. प्रोस्टेट ग्लैंड होची अल्कालाइन मन देखो ये होची अल्कालाइन इन नेचर. तो अल्कालाइन रहिबा काहेकि दरकार आ ये रहिबा काहेकि दरकार कहबी एसिडिक रहिबा भी काहे दरकार. तमरो जो यूरिन जेतले पास करे यूरिन होची स्लाइटली एसिडिक हैला. यूरिन पास करची यूरिन होची स्लाइटली एसिडिक. तो ये जो सिक्रेशन हबा पूर्वरु ये कोन कर सॉरी इजैकुलेशन हबा पूर्वरु स्पर्म बाहर को आसिया पूर्वरु प्रोस्टेट सिक्रेशंस निहाती दरकार हुए. काहे यूरिन पास तो होतो ना रेगुलरली. स्पर्म इजैकुलेशंस रेगुलरली न हले भी यूरिन पास होतो. तेनु कर से रास्ता कोन थियो यूरेथ्रा कोन थियो एसिडिक थियो. यदि यूरिन एसिडिक नेचर तो ऑब्वियसली ये कोन थियो एसिडिक थियो. तेनु करी ए जो न्यूट्रल करिया पाई एसिड थिला तो अल्कालाइन सिक्रेशंस दिला तो ताको न्यूट्रलाइज करबो. काना यदि एसिडिक एनवायरनमेंट रहिला इट विल हैम्पर द स्पर्म. स्पर्म को हैम्पर करबो सो दैट फर्टिलाइजेशन हेई परिबोनी. तेनु करी पढिबा मु सब तुमको डिटेल्स पढेबी बुझ परछो. मु कहया कथा तमे गोटे विजुअलाइज करि परलो जे स्ट्रक्चर टा एमती हेइथिबो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रा हैला. यस मैम. अच्छा की पचारथिलो रे बुझिला ना नाही यूरेथ्रा कोन केमती यूरेथ्रा परठू. यस मैम. यूरेथ्रा एक्चुअली ये जो यूरेथ्रा लिखा है ना दिस इज द पेनाइल यूरेथ्रा. पुणी प्रोस्टेट यूरेथ्रा अछि माने प्रत्येक जगह रे तार ना यूरेथ्रा अछि. यूरिनरी ब्लैडर परठू जो बाहरी छि दिस इज द यूरेथ्रा. तो पर्टिकुलर ए जगह रे में प्रोस्टेट यूरेथ्रा एटा हला पेनाइल यूरेथ्रा हला. तो एमती तार ना है छि डिफरेंट जगह अनुसार माने ऑर्गन कोन कोन अछि से अनुसार ना है छि बुझ पाइलो. सो तो हमें देखिबा ताले. तो प्रथम जिंस ताले तमे देखो कोन ना
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे तो तुमर जो टेस्टिस रही है टेस्टिस को बाहर कवर करके रखी कि स्क्रोटल सैक बा स्क्रोटम बोल की ताको कहंती बुझला डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस माने तमरो टेस्टिस रे ही कोन स्पर्म तैयार हुए सो यूथ्रे गैमेटोजेनेसिस हुए हैला सो टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस इज नोन एज टेस्टिकल्स ए क्वेश्चन सब आसे जो टर्मिनोलॉजी लिखा है टेस्टिकल्स हमें कहा को कहबा ना एठी देखो टेस्टिस अछि ता सहित एमती कहउतल ना कॉइलिंग हेक अछि एक्चुअली एमती टेस्टिस रहला एमती कॉइलिंग हेक कि चीज थाए हला एमती कॉइलिंग हेक थिबो सो दिस इज नोन एज टेस्टिकल्स एक्चुअली इट कॉइलिंग काहे कि थाए बिकॉज़ द स्पर्म इज गेट मैच्योर्ड and the sperm should get the energy to how to travel केमती माने मूव करिवो तार जो माने कोन जिंदी केना मूव स्पर्म केते बाट मूव करी जाउचे पण जीव अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तार पेनिस तापर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो तापर फर्टिलाइजेशन करिवो ता गोटे लॉन्ग जर्नी पर तैयार करिवार अछि ट्रैवल करिवार अछि बुझी कि नहीं तेनु करी सी कोन करे ना ई जो एपिडिडाइमस एरिया रे मैच्योरिटी गेन करे केमिति मूव करिवो से कैपेसिटी भी गेन करे तेनु करी जो टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस इज नोन एज टेस्टिकल्स हैला लेफ्ट टेस्टिस hangs slightly lower the right testis एगुडा आसीबनी क्वेश्चन बट सेति की मन रखता प्रथम जिंस देखिबा कोन why the human testis is present in extra abdominally abdomen बाहर देखो फीमेल मानकर ओवरी कोठी होची लोअर बेली रे हैला किंतु मेल मानक केस रे टेस्टिस भी रही परथांता बट टेस्टिस काहे की बाहर अछि के जानिचो के कहि परबो टेम्परेचर पई केते टेम्परेचर स्पेसिफिकली मन रखिबो 35 2 ରୁ 2.5 टू कम हां 2 to 2 3 डिग्री डिग्री टू कम रहबा हां 2 to मैम बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री कि 3 डिग्री कम रहबा दैट इज द एक्चुअल बॉडी मेंटेन 37 डिग्री बट हां रिक्वायर्ड 35 डिग्री यस वेरी गुड हला तन कर जेते कहबो से बडा 34 to 35 कहबो अदरवाइज कहबो इट रिक्वायर्ड लेस temperature than that 2 to 3 degree less temperature than that of our body temperature हम बॉडी टेम्परेचर जेति की तार 2 ରୁ 3 डिग्री लेस खाली 2 ରୁ 3 डिग्री हेले तो पूरा माने हिमालय हे जिवो बुझि कि नै पूरा ठंडा हबो एनु करी ये केते टेम्परेचर रिक्वायर्ड करे हम बॉडी टेम्परेचर ରୁ 2 ରୁ 3 डिग्री बुझि होची ताले हला अच्छा से सेति पई कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनली हमर टेस्टिस प्रेजेंट अछि तो इंट्रा एब्डोमिनली स्क्रोटम कहार प्रेजेंट अछि तमे पढिबो जो डॉक बिल्ड प्रैक्टिकस अछि तार टेस्टिस भीतर ही प्रेजेंट अछि माने एब्डोमेन भीतर प्रेजेंट अछि बुझ पाइलो तार बाहर नहीं अच्छा तो तापर देखो तो टेस्टिस कोथरे प्रोडक्शन मैच्योरेशन स्टोरेज माने एक्स्ट्रा एब्डोमिनली इज स्पर्म को टेस्टिस राव काम कहला स्पर्म तयारी करिवो स्पर्म को मैच्योर करिवो जो जिंस कहली एपिडिडाइमिस अछि हैला तो स्पर्म केमदी मैच्योर होचे हम देखिबा सर्टोली सेल्स रे तार हेड को केमदी ए करी मैच्योर होचे देखिबा एंड स्टोरेज एक्चुअली कोन हुए स्पर्म प्रोडक्शन सब बेले चली थाए किंतु स्पर्म रो कोन सब बेले इजैकुलेशन होता कि व्हेन देयर इज ए नीड हैला देयर इज ए नीड देन देयर इज ए इजैकुलेशन सो ये कोन हुए ना एपिडिडाइमिस रे स्पर्म स्टोर की भी रहे बुझिला दीटा जगह रे स्टोर हुए प्रथम मन रखता एपिडिडाइमस तापर हमें देखिया तुमको आ गोटे जगह देखेबी सेमिनल वेसिकल्स पाखरे गोटे जगह अछि सेठी दीटा जगह रे स्टोर हे की थाए तो जेते बेले कोन हबो ना जेते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल अर्ज और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशंस then it will be goes through these things otherwise it will store in the epididymis तो तमने मते तमे कह if in case of female if the ovum is not fertilized then it goes through the menstrual cycle if in case of male if it not fertilized if a person is do not do ejaculation means removal of the semen from the penis is known as ejaculations जोदरे कि semen सहित sperm भी बाहर को आसे if that semen will be deposited in the female reproductive tract then it will help to fertilization clear tenu kari so jodi ejaculation does not happen if ejaculation does not happen then what are the fate tale kon hobo na the phagocytic cells are destroy the sperm inside this epididymis clear holo epididymis re hi phagocytic cells सब kon karo nashto kar dabo so nashto kar mane dagu degrade kar dabo बुझ पालो अच्छा तापर देखो स्क्रोटम प्रोवाइड व्हाई द स्क्रोटल सैक जो अछि इ स्क्रोटल भीतर काहे के अछि एडी तमर कोन अछि दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द स्क्रोटल सैक दिस स्क्रोटल सैक फेवर द एनवायरमेंटल कंडीशंस
देखो आमे कहले केते टेम्परेचर दरकार होची ना 35 34 35 2 to 3 डिग्री माने कोन हमर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री 2 ରୁ 3 हेले 34 ରୁ 35 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा टेम्परेचर दरकार environment temperature always 35 to 34 no environmental temperature suppose शीत दिन होईची तो ये कोन हो environmental temperature कोन हो 10 12 डिग्री होईजो हम ओडिसा कथा कहूची बेबे हे जाय सपोज खरा दिन होईची 40 डिग्री माने हैला 40 डिग्री 45 डिग्री 42 डिग्री एमती सेल्सियस तापमात्रा रहउची तो सेही समय ताले स्पर्म केमती प्रोडक्शन हबो तमाने तमे को स्पर्म प्रोडक्शन होउनी नाही हुए एक्चुअली कोन हुए ना एठी कोन हुए ना द स्क्रोटल सैक हैज टू टाइप्स ऑफ मसल्स ए मसल्स ना तुमको परीक्षा रे पचारे गोटे होची कोन ना गोटे होची डाल्ट्रोस मसल्स अनदर इज योर क्रिम्स्टर्स मसल्स हैला दी प्रकार मसल्स अछि डाल्ट्रोस मसल्स एंड क्रिम्स्टर्स मसल्स अछि हैला गोटे हला मन रख गोटे हला क्रिम्स्टर्स मसल्स अनदर इज डाप्टोस मसल्स हैला डाप्टोस आ गोटे हला क्रिम्स्टर मसल्स दी प्रकार मसल्स अछि तो ये कोन करबो इट विल रेगुलेट द टेम्परेचर केमिति रेगुलेट करबो ना व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर अछि माने 45 डिग्री तापमात्रा अछि बहुत खरा होछि तो ये कोन करबो इट विल रिलैक्स द टेस्टिस रो साइज को बढ़े देबो रिलैक्स कर देबो केमती ना द डाल्टोस मसल्स ताको कोन कर रिलैक्स करबो सपोज शीत दिन होईची इट विल कंस्ट्रिक्ट कर देबो पूरा यदि ये कोन करबो कहले जो डाल्टोस मसल से करी ताको रिलैक्स कर दबो फ्लासिड कर दबो सो दैट किछि स्वेटिंग हे जो झाळ बहरी जिवो सो टेम्परेचर मेंटेन रहबो सपोज शीत दिन होईची 10 डिग्री 12 डिग्री तापमात्रा अछि ये कोन करबो ना तमरो टेस्टिस कोडी प्रेजेंट अछि इमती लोअर बेली रहिला ये थाई रीजन रहिला ए मिडिल रीजन में प्रेजेंट अछि टेस्टिस तो ये कोन करबो ना जो क्रिम्स्टर्स मसल्स जो अछि क्रिम्स्टर्स मसल्स बन रखिबो it will uptake the testis towards the abdomen पेट सहित लगेबो कना हम बॉडी रु किछि हीट को अब्जॉर्ब करिया पई मो कथा बुझी पारलो तो जदी शीत होतबो साइज ऑफ द टेस्टिस लिटिल बिट स्मॉलर मींस इट विल बी कंस्ट्रिक्टेड माने कंट्रैक्शन हे जिवो किंतु जदी खरा होतो बा गरम होतो इट विल बी फ्लास्की रहइबो क्लियर तो तो ये कौन हबो ना तमरो फ्लासिड हेगी रहइबो तापर हमें देखिबा कोन हैला तो इट विल बी फ्लासिड बुझ परलो तो एबे देखो आ गोटे जिंस कोन ना द टेस्टिस हैला टेस्टिस ऑफ ए मेल बेबी ता माने कोन हुए ना ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड इफ द बेबी इज ए मेल चाइल्ड जदी तो हैला मेल बेबी जदी प्रेजेंट थिबो तो टेस्टिस तयारी हबा केबेटू स्टार्ट हबो 7th ru 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी रो 7 ru 8 वीक रे स्टार्ट हे जो कोन टेस्टिस तयारी हबा 7 ru 8 वीक माने 2 मंथ बुझिला तो 2 मंथ पाखा पाखी बेलू को कोन हेतु टेस्टिस तयारी हेतिबो किंतु टेस्टिस कोड तयारी हेतिबो इनसाइड द एब्डोमेन पेट भीतर ही तयारी हेतिबो एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्म होला बेलू को बा 7 ru 8 मास बेलू को 7th ru 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रो 7 काने प्रेगनेंसी हमर केते दिन कंटिन्यू करे 9 मंथ 10 डेज सो 7th ru 8 मंथ बेलू को ये कोन करबो ना तमरो जो एब्डोमेन रु लोअर बेली रु कोठी की पळा आसीबो ना स्क्रोटल सैक को पळा आसीबो एमदी माने तले एम्ब्रियोनिक स्टेज रे पेट भीतर थिबो मींस तमरो कोठी टेस्टिस थाए तमे कहबन जे पेनिस थाए तमे कहबो जदी एम्ब्रियोनिक स्टेज रे रहउची टेस्टिस भीतर मेल की फीमेल केंदी जानु जदी मेल की फीमेल जानिया पई की ऑर्गन सेक्स ऑर्गन को देखुचंदी पेनिस अछि की वाजाइना अछि देखुचंदी सेटा बुझ परछो सेगुडा तयारी हेतो बाहरे किंतु टेस्टिस कोडी तयारी हेतो ना भीतरे बुझिछि माने एब्डोमेन भीतरे सेटा तो अल्ट्रासाउंड देखि हबो ना बुझिला तो देखो एठी हमें देखिबा कोन ना जते बेले 7 ru 8 मास हे जिवो माने मंथ प्रेगनेंसी रो इट विल कम्स इट कोन हबो ना तमर एब्डोमेन रु स्क्रोटल सैक भीतर को पळे आसो टेस्टिस बुझ परले थरो स्क्रोटल सैक भीतर को पळे आसो तो एठी गोटे जिंस ताहले देखो ई तो कोटे रास्ता देके आस्तिबो ना हला जो आसी थिबो टेस्टिस ता तो से गोटे रास्ता देके आस्तिबो हला अच्छा माइग्रेट टू द स्क्रोटम 7th ru 8th से जो रास्ता देके आस्ता है ताको कोन कहा जाय देखो सो दिस इज नोन एज इंग्यूनल कैनाल हला तो इंग्यूनल कैनाल थाए स्पर्मेटिक कॉर्ड बोली ताको कहा जाय इंग्यूनल कैनाल तो गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखो हार्निया त माने प्राय सुनि थिबो के हार्निया ऑपरेशन हो मैं बैकग्राउंड साउंड सुबुनी
बैकग्राउंड अन्य के अनम्यूट बोधे करछ मु तो ठीक अछि गोटे मिनिट के बोधे तो म्यूट कर दवा बुझी ना किछि सुबु नहीं क्लियर एबे क्लियर है कि रे मैम एथरा क्लियर है देखो ताले देखो तो ये एक्चुअली कौन होता है ना सपोज ये रहला एब्डोमेन ने टेस्टिस अछि चला ये कौन करिवो एई रास्ता देके आसी छी बुझला स्क्रोटल सैक रे आसी की टेस्टिस अछि एला टेस्टिस एला स्क्रोटम ए टोटल टा होची स्क्रोटम बुझ परलो सो कौन हुए ना आफ्टर द एम्ब्रियोनिक पीरियड मींस आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी इट विल बी फिल अप ए जो रास्ता देकी सी आसीथिबो माने एब्डोमेन नु लोअर बेली रु स्क्रोटल सैक को एटा कोन हबो फिल अप होई जिवो हैला खाली कौन प्रेजेंट थिबो कना पूरी तमर एपिडिडाइम्स भास्ट डिफरेंस जिबार अछि ना खाली गोटे सिंपल रास्ता थिबो गोटे सरुआ पाइप जिबा वाला रास्ता थिबो बाकी आउ सब गुडा मसल्स जाको फिल अप कर देथिबो बुझ परछ तो ए जो रास्ता रे कोन जो भास्ट डिफरेंस जिवो ना स्पर्मेटिक कॉर्ड जो भास्ट डिफरेंसेस जिवो ऊपर को स्पर्म नै की पुनी यूरेथ्रा सहित कनेक्शन करिया पई की आ बाकी तक रास्ता कोन हे जो फिल अप हे जिवो समटाइम्स व्हाट हैपन द इंगुइनल कैनाल इज नॉट फिल अप प्रॉपर्ली मसल्स ताको फिल अप हे नथिबो तो सेतरे कोन होय सपोज जने मेल कोन हेवी एक्सरसाइज करथुबो बहुत वेट रो जिंस उठौथुबो तो एब्डोमेन कोन हबो ए इंगुइनल कैनाल भितर को किछ मात्रा रे पसी आसीबो हैला एब्डोमेन रीजन माने पेट रीजन इंगुइनल कैनाल भितर को पसी आसी सेटा कोन कहंदी हार्निया बोली की कहंदी सुनिथिबो के हार्निया ऑपरेशन होचंदी बोली कहआ जाय बुझ परले एतर कोन ना मैम आउथटे कोन मैम आउथटे कहू हां ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड एम्ब्रियो बिने बुझुछो तो मदर यूट्रस भितर पिला थिबो बुझला 7 रु 8 वीक रे हमरो टेस्टिस कोडी तयारी होची एब्डोमेन भितर एब्डोमेन माने तळ पेट जोडा को कहंदी ओडिया रे इनसाइड द एब्डोमेन तो 7 रु 8 मास हला बेल को प्रेगनेंसी रो 7 टू 8 मंथ एटा जो कहली 7 टू 8 वीक माने 2 मास 7 रु 8 मंथ बेल को ये कोन करबो ना एब्डोमेन नु कोडी की आसीबो हमरो स्क्रोटल सैक को तो जो रास्ता दे के आसीथिबो तो आसी जे माने जो सेटा खसी आसी माने गोटे तो जगह ही थिबो ना फांका जगह आसीबो तळे सो एटा को कोन कहंती इंगुइनल कैनाल बोल के कहंती ए इंगुइनल कैनाल कोन ना व्हेन द testis will comes to the scrotal sac or out of the body माने एब्डोमेन तो ये कोन हबो ना धीरे धीरे फिल अप हे जिवो को मसल्स फिल अप कर दबा कथा माने नॉर्मली हे जाय कि हानिया समस्त को रहउची हे जाय एंड इट शुड लीव सम प्लेसेस खाली किछि जगह ही खाली फांका थिबो कोन पे फांका थिबो ना किछि अल्प जगह ही किछि फांका थिबो काहेकि ना अगेन पुनी भास्ट डिफरेंसेस ता भितर जिबार अछि एतिकी जो ब्लैक कलर जति कली सेतिकी छाडला परे आउ सब गुडा कोन हेइथिबो आउ सब गुडा तमरो फिल अप हे जिवो मसल्स रे बुझ परछो तो एडल्ट मान एडोलेसेंस आसी जाय समटाइम्स व्हाट हैपन दिस इज नॉट फिल अप प्रॉपर्ली बड़े भलो से फिल अप हे नथिबो सो दैट एटा तो हम तमरो एब्डोमेन ही थिबो ना तो एब्डोमेन नो किछि ऑर्गन कोन हबो एई भितर को एंट्री कर जाय ना फांका जगह जदी थिबो ग्रोथ हे गला से सपोज गोटे हेवी जिंस उठौथुबो कोन करथुबो बुझी हेवी एक्सरसाइज करथुबो तो एब्डोमेन ने जो जिंस थाय हमरो से किछि मात्रा रे कि एब्डोमेन नो किछि एरिया आ भितर को एंट्री करे ताको कोन करा जाय ना हार्निया बोली की कहआ जाय जदी किछि मेजर ऑर्गन ता भितर को एंट्री करथिबो ताको ऑपरेशन करी रिमूव करा जाय आ एटा को फिल अप करा जाय बुझियला ना नहीं बुझ परलो मैम जो ऑपरेशन करंती जले को पार्ट बाहर कर दिया जंती कोटा बाहर करिवो कोन जोटा एंट्री कर जाइथिबो तो ताको ऑपरेशन माने रिमूव करिवेनी ऑपरेशन माने इफ दे वांट टू फिल अप केम ताको फिल अप करबार अछि बुझला ए जो एटा को देखो एटा हला इंगुइनल कैनाल ए भीतर देखि पूरा आछि इंगुइनल कैनाल ए रहिला पूरा ए भीतर सपोज गोटे किछि एब्डोमेन ऑर्गन पड़े आसला हैला सपोज यूरिनरी ब्लैडर थिबो से गोटे साइड व्यू आथिबो एटा कि पेन दबो पेन फीलिंग्स आसीबो तो ताको कोन करा हरि ऊपर को करा हबो एठी किछि फिलिंग करा जाय कोन से माने जिंस फिलिंग करा जिवो टिश्यू जो ये हो फिलिंग करा जाय बुझला तो हार्निया बोली के कहंती तो ये रहिला तमरो अच्छा तापर देखो कोन ना हमरो फेल्युअर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बेले बेले कोन हुए ना हे देखो एठी चित्र अछि एब्डोमेन ने थिला तो इंगुइनल कैनाल देकी आसी की कोठी नॉर्मल ए जे नॉर्मल टेस्टिस आसी की एठी प्रेजेंट रह गला देखि परछो ए चित्रटा ले एब्डोमेन नु आसी की पहुंच गला तो बेले बेले कोन हुए ना इफ द टेस्टिस डज नॉट कम टू द व्हाट स्क्रोटल सैक बेले बेले माने किछि पिल्ला जन्म हे टेस्टिस आसी नथिबो तापर तांको आफ्टर बर्थ तांको ऑपरेशन करा है कि टेस्टिस को आना जाए हला समस्त जे नॉर्मली आस्तो सेंति ना सेंति बेले बेले हुए
तेणु करी जदी ताको हमें कोन कहबा तो क्रिप्टोक्रेडिज्म हाँ क्रिप्टोक्राइडिज्म बोली कहती फेल्युअर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रूटम अनदर वर्ड आ गोटे वर्ड अछि तमरो कोन कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन मींस रिमूवल ऑफ द गोनाड माने टेस्टिस को जदी सर्जिकली रिमूव कर दबा बाहर कर दबा जेंति कि देखतिबो तमरो जो काओ आ बुलक गाय आ षंड सॉरी गाय कहूचे बलद आ षंड सुनिछ ऑक्स आ बुलक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्स एंड बुलक बुलक माने षंड जोडा को कहउचंदी ओडिया रे एंड बलद होची कोन डिफरेंस के कह परबो बुलक आ ऑक्स भितरे बलद आ षंड भितरे both are male बड़ा बोल कोन डिफरेंस Excuse me, ma'am. ब्लॉक Ma'am. ब्लॉक रे सेक्स ऑर्गन थिबो ऑक्स रो नथिबो yes माने testis organ male- तो हाँ testis was removed in case of ox जेटा बलद कहूचे सेदरो टेस्टिस को बाहर करा जाए कैस्ट्रेशंस करा जाय थाए हले तो सो दैट बलद को नै कि हमें कोन चाष करि परंती आगु लोक माने माने ताको यूज करथिले सगड़ टाणुथिले माने किछि जिंस लगेज एपिसोड करे पई चाष करथिले किंतु बुलो को करि परउनी काई ना तार टेस्टिस अछि सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सो बुलो कि सो एग्रेसिव षंड ही लड़ाई करंती ए बलद लड़ाई करियार देखिछ हला तो जेहेतु टेस्टिस हमर कोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होची आ टेस्टोस्टेरोन मेक देम मोर एग्रेसिव से माने बहुत हेल्दी भी थांती षंड गुडा बलद वीक थांती टेस्टोस्टेरोन कम थाए बुझ पालो हला Ma'am, कैस्ट्रेशन हां ma'am, castration for the spelling टा हम कहले मैम CASTRA ठीक है हां C अछि ना CTION हां TRACTION हाँ हाँ टीओएन कैस्ट्रेशन ओके अच्छा तो बेले बेले कोन हेतै ना गोटी ही टेस्टिस आस्तिबो यूनिलैटरल बोली कहबा यदि दीटा जांको टेस्टिस स्क्रोटल सैक को पड़ाइसला तो बायलैटरल बोली के कहबा बुझिला सो स्पर्माटोगोनिया जो रहिला जो हमर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स टेस्टिस भीतर अछि हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा डिटेल्स पढिबा स्पर्माटोगोनिया रहिला दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेंपरेचर हला हमर जो स्पर्माटोगोनिया सेल्स जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स रहिला वेरी वेरी सेंसिटिव कोठी तमरा स्पर्म प्रोडक्शन हबो माने टेंपरेचर को बहुत सेंसिटिव थाए सेति पई तमरा कोन अछि डाल्टस मसल्स प्रेजेंट अछि बुझिला तेनु करी हला अच्छा तो ए हला आज एति के हम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे तुमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट करबा बुधवार दिन ए सप्ताह पई हला अच्छा जेति पढाला बुझि पलो ना कार कोन जदी डाउट अछि मते कुआ जदी पढाला बुझि हां फीमेल रे जेतले ओव्यूम टा माने हुए तयारी हुए जोडा माने जोडा डेड हे थाने सेडा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हिसाब रे माने रिमूव हे जानती तो सेमती स्पर्म रे जो गोटा माने फर्टिलाइज करि परिबेन सेटा कोन हुए actually million of sperm are deposited inside the female body hela 300 million Yes. means 1 million means 10 lakh so 300 million जाउची माने so these are the destroyed as the form ଆମ बॉडी रे भी गोटे जेंति हम तम घर जेंति माने थाय कोन डस्टबिन बॉडी रे भी सेंति गोटे प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन मेशिनरी सिस्टम अछि आ किछि फागोसाइटिक सेल अछंती जो सेल्स रो कोनोसी फंक्शंस रहबनी बॉडी ताको जेंति घरे तमर जिंस दरकार ना डस्टबिन आनी कि पकोच प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन मशीनरी ताको कहंती हैला माने जेंति डस्टबिन एक्जेक्टली सेबडा थाए तो से बॉडी ताको कोन कर रिमूव करेबो हैला ताको डिस्ट्रॉय करिवो तो डिस्ट्रॉय करी कि ताले कोन करूची तमे सिना नै कि कचरा सब माने म्युनिसिपालिटी वाला आसी नै जाउचंदी से माने कोन करिवे ताको ब्रेक करिवे से जो मटेरियल ले तयारी हेतिला से मटेरियल को आउथरे रीयूज करा हबो बुझिला सपोज किछि प्रोटीन अछि प्रोटीन को आगोट यूज करी हबो बुझिला जेंति कि तमरा आरबीसी ब्रेक डाउन करूची आरबीसी रे हीमोग्लोबिन अछि हेम अछि और ग्लोबिन अछि ग्लोबिन इज द प्रोटीन हेम इज द आयरन पुणी से आयरन यूज हि जिवो पुणी आउथरे आरबीसी तयारी हबारे बुझि पालो तो एमती सिस्टम चलची आ जदी तमे आ जो कथरा कहली कोन ना मेल बॉडी रे ही जदी मेल इजैकुलेट करूनी तमर वन ऑफ द बट सेंट स्वामी विवेकानंद he was the person that do not do ejaculation in their lifetime because he was also dead in 36 or 34 at the age of 36 or 34 I cannot recognize means remember these things very early as he was died so but they could not do masturbation that to removal of the semen so
ताहले तमे हमें कोन कहि परबा व्हाट आर द थिंग्स ता माने नुए जे स्पर्म प्रोडक्शन होनुतला स्पर्म प्रोडक्शन तो होउतला बट दे विल गो टू phagocytosis inside the epididymis बुझिला यस मैम अच्छा आ कर कोन डाउट अछि थैंक यू मैम मैम जदि सीमेन न बाहरे ताले कौन प्रॉब्लम हो सीमेन किछ प्रॉब्लम नहीं this will get phagocytosis inside the cells so removal of the semen or sperm is required for the what fertilization purpose किछ प्रॉब्लम नहीं है ना अच्छा ओके आ किछ पचरिबो मैम क्रिप्टोचाइल्डिज्म जोटा सेटा हां क्रिप्टोक्राइडिज्म सेटा होजी जोटा तुमको एग्जांपल देली ना माने सर्जिकली रिमूवल करहाबो टेस्टिस को जदी बाहर कराई दिया होजी को माने केस तुमको जेंदी कहली बळद जोटा को होउची माने तमरो कैटल जो बळद को होउची आमे ताको कोन करचुंदी बळद को आमे यूज करंती कोन पई ना फॉर द मिल्चा ब्रीड पर्पस मींस लेबर पर्पस रे आगु लोक सगड देखितो टीवी रे देखितो आखिरे तो देखि नथिबो टीवी रे देखितो सगड दिटा बळद एंती जुटा हेतो मैम देखिछु हां टीवी रे देखिबो से देखिना एमिदी भी देखिछु खाली आखिरे हां देखिछ तो भलो कथा आ जो लंगळ थाए गोटे माने लंगळ कहंती हळ यस मैम बळद थिबे मझिरे गोटे एंती लुहार थिबो तो ताकू माटी को खुळा हबो हला लोक सितरे यूज करथले जे संढ को नेकी से काम करि होबनी कने संढ भुसी मार दो लोकन को कने संढ होची जेहेतु तार टेस्टिस अछि टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होची दे आर मोर एग्रेसिव बहुत एग्रेसिव थाए किंतु बळद एते एग्रेसिव न थाए बुझुची तो से जो कंडीशन से हमें कोन करा हंदी हम इतला गाने थिलु सब मामर कंदी बाछरी व्रत करिया आसंदी सब वेटरनरी डॉक्टर माने आमे हितरे बुझी पारु ना कोन व्रत करिया आसाइची तापरे हमर ब्राह्मण तो जेतले हम भाई माने सब व्रत होंदी आमे बाबू व्रत करा होजी माने बळद को जेंदी छोट छोट बाछरी की जेंदी व्रत करा होजी माने माने सेंदी व्रत करा हबो जे सब 7 जे 10 11 वर्ष रे व्रत होतु ठीक अछि जो माने सब 7 वर्ष रे व्रत होतु से छुआ पर आमे सब डरै देतु जे बाछरी रो जेंदी करा होजी तुमरो सेंदी करा हबो तो एंदी सब चले आ तो बुझियला जो सर्जिकली काहे कि रिमूव करा हो ह्यूमन केस रे करा जाय नी तो मोस्टली ए माने कैटल केस रे करा जाय हैला तो एबे जो म्युनिसिपैलिटी देखचो किछि कुकुर मानन को धर कि नउचंदी तापरे आनी कि छाड़ दोचंदी देखिछो भुवनेश्वर रे जदी के रहउथबो माने म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आसीबो किछि कुकुर को धर कि नबो तापरे आनी छाड़ दबो देखिछो केबे एक्चुअली कैस्ट्रेशन करके आनी छाड़ दोचंदी काहे ना बहुत कुकुर हे गले ना कुकुर बहुत जन्म कर दोचंदी तो कुकुर